Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the class of accounting. As you all can see on the screen that we are here that is starting up your chapter correction of errors. So let's proceed towards the today's question that we are solving the past papers right now. Yesterday we have done one question in which all of you have shown a good interest. Now let's proceed towards the today's question from the past paper. This is your question. The screen is very much clear to you, hope so. This is a question from the past papers. I am proceeding towards the question. You all can take the screenshot. Okay, now the following errors were discovered before closing of works of Hydrate Company. The name of the company is Hydrate. Give entries in journal to record each of the following. Okay, now what you people have to do, first of all, as I told you that you people have to prepare the columns for your you can say recording of transactions, and you have to prepare the three columns. The first column is your correct, then wrong, and then corrected. So you people have to prepare the three column for the correct, wrong, and then corrected entries. Clear? So kindly open your registers and start solving your work with me side by side. I'm giving you the few minutes that you people can start your working. Okay? So this is the format that you all have to follow for recording your questions and doing your work for the correction of errors और एग्जाम perspective में भी आप लोगों ने अपने correct और wrong दोनों बना के फिर correct show करनी है because correct and wrong will be treated as your working part. Clear? Okay, now I proceed towards your question. Yes, you all can see on the screen that we have purchase of furniture 12,000 was wrongly debited to purchase account. First of all, I'm requesting you people or my participants that you have to prepare the correct entry. The correct entry जो भी हम consider करेंगे वो आपको purchase of furniture की general entry बनानी है that you have just purchased furniture of rupees 12,000. So definitely it is on your cash transaction. Okay, you are treating you're purchasing your furniture on cash, so you have to record it by cash. So what will be the journal entry? I'm giving you a little bit time, then I will proceed towards the question. First of all, you have to prepare the first journal entry, purchase of furniture, then wrongly debited to purchase account. As you are purchasing furniture, so your first will be furniture debit 12,000, amount ना भी लिखें because here amount कितनी ज़रूरत नहीं, and then cash credit 12,000. ठीक है? And then what is the mistake by the accountant? Your wrong entry will be purchases debit 12,000 and then cash credit. Okay, so this will be your wrong entry. This will be a wrong entry. Now I am expecting you people that you people can be able, my all the students can be capable enough to rectify the entry. How you can rectify the entry? You have to do the debit purchases, sorry, debit furniture. The correct entry is that the furniture should be debited, so you will debit your furniture, and you will credit your purchases. ठीक है? Amount the same, you can write it down 12,000 and here 12,000. These are your three entries on your screen. You all can see the first entry, that is purchase of furniture. This is your correct entry, furniture debit and cash credit. Amount is 12,000. Okay, we are purchasing the furniture by cash. Then second, the mistake or the error which is done by the accountant, that he has recorded this purchase of furniture in the purchases account. Now
What is the entry recorded by accountant? He has purchases debited and then cash credited. Hmm, wait. Yes. And then the third entry which we have made, the corrected one, we rectify the above two entries and we recorded purchases and debited, क्योंकि correct entry में purchases को debit होना चाहिए था, ठीक है, and your sorry, furniture को debit होना चाहिए था and your purchases will be credited. So this is the correction and of your first transaction. Now I proceed towards your B transaction. Before proceeding, I would like to a wrong entry. The second transaction, salaries expense of rupees 15,000 was recorded as service expense. Your correct entry will be salaries expense 15,000 and your cash will be credited with 15,000. Now the wrong entry will be the service expense will be 15,000 and your cash 15,000. ठीक है? Yes. Now we have to go through the corrected entry. We have to rectify the accountant has done the mistake that he has wrongly recorded the salaries expense into service expense account. अब आपको जो wrong में debit हुआ हुआ है service expense, इसको ख़त्म करना है, तो हम service expense को कर देते हैं बेटे credit, क्योंकि ये wrongly debit हुआ हुआ है, ठीक है। और आपने उसके रिटर्न में, वेट, ये तो क्रेडिट है ना, आपने उसके कॉन्ट्रा में जिस चीज को डेबिट करना है वो आपका होगा सैलरीज एक्सपेंस। करेक्ट एंट्री में सैलरीज एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था 15,000 से। सर्विस एक्सपेंस हमें यहाँ से ख़त्म करना है जो कि अकाउंटेंट ने रॉन्गली डेबिट कर दिया। वेयर आई एम मूविंग माई कर्सर, ठीक है। जो चीज़ आपके पास गलत डेबिट हुई हुई है उसको ख़त्म करने के लिए आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और जो करेक्ट है जिसको आपको डेबिट करना था उसको आप डेबिट में ही लिख देंगे। So your last entry will be your corrected entry in which you are recording it as your correction, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकेंड एंट्री है, यहाँ पे देखें सोल्यूशन में इन्होंने इसको सेल्स एक्सपेंस लिखा हुआ है, ये सेल्स नहीं है, ये सैलरीज एक्सपेंस है, ठीक है, बिकॉज इन योर क्वेश्चन इट इज सैलरीज एक्सपेंस नॉट सेल्स एक्सपेंस। Now hope so you people are getting it very well. Depreciation, this is little bit tricky but not that much. Depreciation was overcharged by 3,000 through allowance for depreciation account, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, डेप्रिसिएशन को ओवरचार्ज कर दिया है, ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है, कितने से, 3,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। इट मीन्स देयर इज़ अ मिस्टेक ऑफ अमाउंट, अमाउंट में गलती है। अब हमें ये नहीं पता कि वो किस अमाउंट में उन्होंने 3,000 ज़्यादा चार्ज किया है, ठीक है, आपको अमाउंट का नहीं पता। सो लेट्स थिंक कि हमारे पास जो करेक्ट एंट्री बनती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड देन वेट अलाउंस और डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये आपकी करेक्ट एंट्री बनती है, ठीक है। अब उन्होंने किसी अमाउंट में 3,000 ज़्यादा रिकॉर्ड किया है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो अमाउंट 3,000 ही है जिसको हम डबल कर देते हैं, तो डैट विल बी योर 6,000, ठीक है। इट मीन्स हम वो अमाउंट 3,000 थी जिसको डबल करने के बाद हमने 6,000 रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। सो दिस विल बी योर दिस शुड बी योर करेक्ट एंट्री। अब हमारे पास अकाउंटेंट ने, सॉरी, 3,000 से होना चाहिए था, मैंने उल्टा रिकॉर्ड कर दिया, रॉन्ग में मुझे बनानी है, सॉरी, 3,000 से रिकॉर्ड होना चाहिए थी करेक्ट में। हमारे पास अकाउंटेंट ने इस एंट्री को यानी इस 3,000 को डबल रिकॉर्ड कर दिया। इट मीन्स उसने ट्रांजैक्शन में कोई मिस्टेक नहीं करी है, सिर्फ उसने अमाउंट को डबल रिकॉर्ड किया है। सो डेट्स वाई मैं इस 3,000 को 6,000 रिकॉर्ड कर देती हूँ। क्लियर? जो करेक्ट एंट्री है वो हमारी बननी चाहिए थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट
जिसको अकाउंटेंट ने ओवर चार्ज कर दिया 3000 से, तो मैंने क्या किया, अकाउंटेंट की 3000 की जगह 6000 लिख दिया, तो ये ओवर चार्ज हो गया, ठीक है। नाउ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अगेन 6000। अब आपको इस एंट्री को करेक्टिफाई करना है, ठीक है। ये दोनों एंट्रीज नजर आ रही हैं इस पर स्क्रीन पे आप लोगों को क्लियरली, ठीक है जी बेटा। Now your first entry is it should be 3000 debited। अब आपने इस depreciation expense में से 3000 माइनस करने हैं ताकि ये हमारी करेक्ट एंट्री जितनी बन जाए, ठीक है। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो कि आपने 6000 से क्रेडिट किया है, वो भी आपका जो है वो 3000 होना चाहिए। व्हाट शुड आई डू, मुझे इस वाली अमाउंट में से, वेट कीजिएगा ये नीचे आ गई है, मुझे इस वाली अमाउंट में से जो कि मैंने डेबिट किया डेप्रिसिएशन, इसमें से 3000 माइनस कर दूंगी, तो डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएंगे 3000 से, ठीक है। एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में भी मुझे 3000 माइनस करना पड़ेंगे ताकि ओवर चार्ज वाली बात खत्म हो जाए, यानी रॉन्ग वाली को करेक्ट करना है। तो क्या करती हूँ, इन एंट्रीज को रिवर्स रिकॉर्ड कर देती हूँ। अलाउंस फॉर, वेट बेटा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 3000, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्रेडिट 6000 था, इसमें से मैंने डेबिट कर दिया 3000, इसका मतलब 3000 ही बचे, तो मेरे पास करेक्टेड में 3000 ही आंसर लाना था, ठीक है। वेट, एंड देन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज अगेन, उसमें से भी मुझे 3000, क्योंकि डेबिट में 6000 थे, 3000 इसमें से माइनस करना है। डेबिट में से कोई चीज निकालनी होगी तो उसको क्रेडिट कर देंगे, और तो हमने 3000 क्रेडिट कर दिए, और इस क्रेडिट पे से 3000 निकालने, तो मैंने उसको डेबिट कर दिए। नाउ माई एंट्री इज बैलेंस्ड, ठीक है। अब मेरी एंट्री बैलेंस हो गई है। अगर मैं करेक्ट एंट्री देखूं तो मेरे पास अब ये मेरी करेक्ट एंट्री ही बन जाएगी, क्योंकि अकाउंटेंट मेरी इस वाली एंट्री को, जहां में देखिएगा इस वाली एंट्री को जिसको मैंने ब्लू हाईलाइट किया है, अकाउंटेंट ने ये एंट्री पोस्ट कर दी है, ये एंट्री वो रिकॉर्ड कर चुका है 6000 से। 6000 में से आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में से 3000 माइनस करने हैं जो कि इस वक्त डेबिट में है, ठीक है। 3000 माइनस करने के लिए मैंने उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया 3000 से, ठीक है क्लियर। तो अब हमारे पास 6000 डेबिट के, 3000 क्रेडिट के, आंसर क्या आएगा, डेबिट का 3000, क्लियर। नाउ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो कि इस वक्त मैंने ब्लू किया हुआ है, अकाउंटेंट ये एंट्री रिकॉर्ड कर चुका है, जो कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन उसने 6000 से क्रेडिट किया है। मुझे इसमें से 3000 माइनस करने हैं, मैंने क्या किया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया है 3000 से। अब आप देखें, क्रेडिट का 6000, डेबिट का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यानी 3000, ठीक है। प्लस माइनस माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर क्रेडिट का 3000 आएगा। होप सो इट इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज यू कैन आस्क मी। This is for this transaction. This is your transaction C. Now I'm proceeding towards your transaction D. We have return of defective furniture worth 2000 was recorded as purchase return account. It is very easy. Defective furniture की worth है आपके पास 2000, ठीक है। डिफेक्टिव फर्नीचर की वर्थ कितनी है बेटे, 2000। यहाँ पे ये एंट्री आपके पास स्क्रीन में नजर आ रही है। द रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव फर्नीचर वर्थ 2000, उसकी वर्थ कितनी है, 2000 उसकी वर्थ है, हो गया वो डिफेक्टिव, ठीक है। अब आपने उसको क्या किया, रिटर्न किया है। यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि ये आपका जो है वो सेल्स है या परचेज है, क्योंकि हमारे बिजनेस का नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है। जब भी हमारे बिजनेस का नाम नहीं लिखा हुआ होता तो हम इस चीज के लिए ज्यादा श्योर नहीं होते कि हमारा फर्नीचर का अपना बिजनेस है या नहीं है, इसलिए हम इसको सेल्स रिटर्न नहीं बोल सकते। हमारे पास आया रिटर्न और डिफेक्टिव फर्नीचर, हमने उसको यूजली करेक्ट एंट्री क्या रिकॉर्ड करी, हमारे पास हमने क्योंकि रिटर्न कर दिया, कैश डेबिट हो गया, एंड देन फर्नीचर क्रेडिट हो गया। इज दिस क्लियर। हमारे पास से फर्नीचर जा रहा है, ठीक है, रिटर्न हुआ है। इट मींस सिंपली वी हैव रिकॉर्डेड इन योर क्रेडिटेड साइड ऑफ द फर्नीचर, ठीक है। You are returning it, you are not getting it, ठीक है। तो once you are returning your furniture it means it will be credited not debited, clear।
देन अमाउंट आपके ऊपर है, ना भी लिखें इसमें, मैंने यहाँ पे अमाउंट्स मेंशन ना नहीं करी हैं, आप लोग इसके आगे 2000 मेंशन कर दें, नो इशू। देन अकाउंटेंट ने नेक्स्ट एंट्री में क्या पास किया है, वॉज रिकॉर्डेड एज परचेज रिटर्न। उन्होंने उसको जो फर्नीचर है उसको रिकॉर्ड कर दिया एज परचेज रिटर्न के नाम से, कि वो आपके पास परचेज रिटर्न हुआ है, जो आपने खरीदा था वो रिटर्न हुआ है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू करेक्टिफाई इट। जब करेक्टिफाई करना होता है तो हमारे पास, हम करेक्टिफाई किससे करते हैं, रॉन्ग एंट्री में परचेज रिटर्न रॉन्गली रिकॉर्ड हुआ है, क्रेडिट पे है, उसको सही करने के लिए आप परचेज रिटर्न को डेबिट में लिखेंगे। एंड फर्नीचर जो कि आपके पास एक्चुअली क्रेडिट होना चाहिए था, उसको हमने क्रेडिट में लिख दिया। दिस इज वेरी सिंपल ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये बहुत आसान सा है, सिर्फ उन्होंने आपको कंफ्यूज किस चीज पे किया है, रिटर्न और डिफेक्टिव फर्नीचर। अब हमारे हो सकता है बिजनेसमैन का अपना ऑफिस फर्नीचर उसने डिफेक्टिव रिटर्न किया हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो उसका उसकी सेल्स हो। ठीक है, तो जब सेल्स का वर्ड मेंशन नहीं होता, हमें ये नहीं पता कि उसका फर्नीचर का बिजनेस है, तो दैट्स व्हाई हम इसको उसकी सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न को अज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी हैव रिकॉर्डेड इज कैश डेबिट एंड फर्नीचर क्रेडिटेड। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एंट्री, वेट फॉर अ व्हाइल, आई डू गिव यू द टाइम। Your next transaction, yes, we have over here the sale of old equipment worth 10,000. You have sold your old equipment. Okay, sale of old equipment worth 10,000 was recorded as sales account. Okay, again, it is not mentioned that it's your business. What you have to do, your all equipment is gonna selling, you record it as cash debit and equipment credit, because it is not mentioned that it is your business. ठीक है, cash debit and equipment credited, you have sold your old equipment, जिसमें से आपके पास equipment चला जाएगा और cash आ जाएगा। ठीक है, amount 10,000 आप mention कर सकते हैं। Now what is the mistake done by the accountant, accountant ने उसको अपना sales of the business समझ के record कर दिया है, cash debit and sales credited। ठीक है, and in the corrected what you have to do, equipment जो कि actually credit होना चाहिए था, आप उसको credit लिखेंगे, sales जो कि wrongly credit हुआ है उसको आप debit कर देंगे। This is your very simple solution of your transaction number E. Clear? Now the next transaction is your F. Payment for owner's club fees 6,000 was recorded as fee expense. It means you are paying your club owner's club fees, that was your 6,000, and you have recorded as fees expense. When you are doing any expense for the owner side, it will be treated as your drawing. Okay, so I will choose this. Huh. How we are recording, how we will record it, it means your drawing should be debited 6,000 and cash credited 6,000. Okay, then what is the mistake done by the accountant, what is the wrong entry, is your fee expense, uh, wait, fee expense debited 6,000, this is the made by the accountant and he has recorded it wrong। अब इसको करेक्टिफाई कैसे करूं, जो करेक्ट में जिसको डेबिट होना चाहिए था, ड्राइंग को डेबिट होना चाहिए था ना, यस, वेट, एक एंटर और प्रेस करते हैं, वेट फॉर अ व्हाइल प्लीज। ड्राइंग डेबिट, ओके, विद द अमाउंट ऑफ 6,000, और जो आपने फी इनकम रॉन्गली डेबिट किया हुआ है इसको आप क्रेडिट करते बेटे, फी इनकम नहीं, फी एक्सपेंस, सॉरी। ठीक है, so this will be your entry for the last transaction also. You all can see on the screen, we have recorded the payment of owner's club fee 6,000. It means drawing debit, cash credit, and it is recorded as fee expense. That is your fee expense will be
6,000 and cash is just 6,000. So this is your wrong entry. इसको accountant ने wrong record कर दिया है. Now fee income, fee expense जो कि इस वक्त wrongly debit हुआ है, इसको खत्म करने के लिए हम यहाँ पे credit कर देंगे. Clear? हमने यहाँ पे ड्राइंग को डेबिटेड करना था तो ड्राइंग को डेबिट कर दिया. कैश के अकाउंट को हम लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन लोगों ने कैश के अकाउंट की करेक्शन नहीं मांगी है, और वैसे भी अकाउंटेंट ने कैश को सही रिकॉर्ड किया हुआ है क्योंकि करेक्ट में भी कैश 6,000 से क्रेडिट होना चाहिए था और अकाउंटेंट ने कैश सही रिकॉर्ड किया, इसलिए हम कैश को वैसे भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं. क्लियर? दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. Okay, so hope so you all can understand it. If you have queries you can ask me, then I will proceed towards your next question. I will give you one home task for your practicing. Yes. Now this question is your home task, and in this question, what you have to do over here, where I'm moving my cursor, the following errors were found before closing the books of Kareem Brothers. We have again the sixth transaction. In the examination, you will also get the sixth transaction for your Karachi board. Purchase of stationery for 1200 has been recorded in purchases. Then B, construction as addition of office building. It means it is your construction expense office building 30,000, and you have wrongly debited to repair expense account, so it will be treated as your construction expense. Okay. Then we have C, defective goods returned by a customer for rupees 2,000 were charged to sales account. D, depreciation expense on machinery was overcharged by rupees 1,000 through the allowance of depreciation account. हमने आज ही ऐसी एक ट्रांजेक्शन सॉल्व करी है, so it will be easier for you. ये आप लोग का अच्छा रिविजन हो जाएगा. Now E part, cash rupees 900 received from customer name Naseem, sorry, was recorded as received from Nasreen. So you have to record the correct entry: cash received from customer, cash debit, account receivable credit. Okay, and accountant have made the mistake in the name. हमें रिकॉर्डिंग बनानी थी नसीम की, एंड अकाउंटेंट ने वॉज रिकॉर्डेड कर दिया उसको नसरीन के पास. सो देयर इज अ mistake in the name. Okay, then your last entry is rupees 600 was paid for repair of proprietor home TV set and debit to general expense account. So your again it is very easy, repairance of proprietor home TV. So definitely आप लोग को सुन के भी समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा अकाउंट है. So let's talk about tomorrow in the next lecture. We will go through the solution of this question, and I want you people to also solve this sixth transaction, which is very easy. This is all for today. Thank you so much. Now, okay, thank you so much. Allah Hafiz. Thank you so much once again. This is the correction of errors chapter. Hope so you like the all the videos regarding the YouTube channel Accounting by Sumaira Mahmood. Kindly subscribe my channels and forward it to your friends so that they can also get the benefit from the lectures which I'm recording on daily basis for your assistance. Thank you so much. Allah Hafiz.